it's raining in Delhi and it's raining heavily. I reached with some difficulty, but I reached. Yeah, so let's start. Yesterday, what we discussed, I think justice. We were on justice. Okay, थोड़ा summarize कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. Who will do it? Somebody about justice. Yeah, who will summarize it? Sir, Yeah, go ahead. Yes, go ahead. Sir, yesterday we did justice. What is justice? Justice is a lawful thing. Doing just is a justice, and the laws are made by. Yeah, no, doing lawful thing. Yes, yes, sir. Yeah. Doing lawful thing is justice, and laws were made by these legislators, Right. and lawbreakers were unjust. Right. And also we go through with the types of justice, like corrective justice and distributive justice. Corrective justice is also known as rectificatory justice. Right. And distributive justice. And so this corrective justice is two types. It works in two conditions: it's voluntary and involuntary. Yeah. We'll do it. We'll do it today. So write about distributive justice. Distributive justice. ओके पहले डिस्ट्रीब्यूटिव कर लेते हैं, उसके बाद करेक्टिव ये कर लेंगे. क्या नाम है आखिर? फर्स्ट राइट, नो प्रॉब्लम. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, करेक्टिव जस्टिस कुछ भी कर लीजिए. पहले डिस्ट्रीब्यूटिव कर लेते हैं. Okay, yeah, so write about distributive justice. No. How can I left? How can I leave? Okay, distributive justice. लिखिए, distributive justice refers to distribution of wealth, honor, and other assets of community. Sir, PPT is not visible. Is it not visible? Yes. 1 minute. Is it not visible to all, or it is the issue of Sunita alone? I think, sir, only to me. Is it visible? Okay. Is it visible to Abhinav, Amisha, Janvi? Yes, sir. Again, फिर वैसे हो गया, sir. Okay. What should I do? Sunita, should I upload it again? 1 minute. Hold on. Let me upload it again. Yeah, Sunita, tell me whether it is visible to you or not. Sir. Yes, sir, visible now. Visible? Okay. So write distributive justice. Distributive justice. Right? Distributive justice refers to distribution of wealth,
honor, and other assets of community. How is it distributed? How wealth or honor should be distributed? Is it equal distribution or unequal? That is the question. How we should, if the distributive justice is refers to distribution of wealth, honor, and other assets of the community, then how should this wealth, honor, and other assets should be distributed? Is it equal or is it unequal? यहां तक हो जाए तो बताइएगा। डन निष्ठा? Distributive justice, Amisha. Distributive justice means बंटवारा। किसका बंटवारा? Distribution means बांटना। किसका बंटवारा? वेल्थ का, ऑनर का, और जो भी एसेट्स हैं कम्युनिटी में, उसको हम कम्युनिटी में कैसे बांटेंगे। इट मीन इसका मतलब ये है, राइट? और क्या हम जो वेल्थ है या ऑनर है या अदर एसेट्स है, उसको हम बराबर भाग में बांटेंगे या अनइक्वल भाग में बांटेंगे, कैसे बांटेंगे? अब एरिस्टोटल ने हमें सजेस्ट किया है, लिखिए। एरिस्टोटल सजेस्ट दैट distribution of wealth, resources, honor, and other assets should be distributed on the basis of proportional desert. Desert मतलब होता है deserve. यहाँ desert मतलब सहारा desert मत ले लेना, और थार desert. No. Desert means what you deserve. Aristotle suggests that distribution of wealth, resources, honor, and other assets should be distributed on the basis of proportional desert. हो जाए तो मुझे बताइए ये लाइन। गुड जानवी, बहुत बढ़िया। गुड अंश। Yeah, it should be based on geometrical or geometric proportion. It means rich should get more and poorer should get less, and equal should get equally. We have already discussed it in the history class. Proportion equality. Aristotle suggests that distribution of wealth, resources, honor, and other assets should be distributed on the basis of proportional desert. It should be based on geometric proportion. It means rich should get more and poorer should get less, and equal should get equal. Now, in the last class, Nishtha was not there. Nishtha, have you been through the recorded classes? Since you are not there, Sarthak is not here, right? No problem. He sent me question answer. Okay, no problem. But are you getting the sense? You have to go through, right? So that is your backlog. You must finish it as soon as possible. Okay, until you won't get, until you won't go through the backlog, it would be very difficult to understand. Okay, done? Okay, everyone done? Okay, okay. If persons are not equal, then they should not receive equal share, but proportional one. If persons are not equal, then they should not receive equal share, but proportional one. कल हम ये बात कर चुके हैं, proportional one. कौन मुझे बताएगा? निष्ठा भी क्लियर हो जाएगी. Who will talk about this proportional equality? Chanvi, can you do that? So explaining proportional equality. Right? Yeah.
So this basically means that there should be equal shares according to one's merit or wealth or resources. So if somebody is rich, like compared to another person, he will get more in respect to that person, and somebody who is poor will get accordingly. So when there are people who are on equal then they will be getting equal shares. Right. However, if they're not equal, they will not be receiving equal shares but proportional ones. So this is what proportional equality talks about, that each person would be awarded responsibilities or benefits according to one's proportion or just deserts. So Desert, yeah. And desert means, Janvi, the word desert here meaning? Desires or needs. No desires, deserve. Deserve. Exact word is deserve. According to one's merit. So what one deserve? For example, कल मैंने example दिया था, एक मिनट कि मान लीजिए कि A, there are A, B, C, D, E, F, and G and H. These 2, 4, 6, 8 members in the society. So A has 10-acre land, and F has 3-acre land. C has 3 acre. E has 10 acre. G has 5 acre, and B has 5 acre. H has 15 acre. Right. Now you have land to distribute. For example, you have 100-acre land to distribute. How will distribute? We will distribute according to the proportionality. The share of 3 and share of C will be equal, right? And share of B and share of G will be equal. Share of F and share of E would be equal, and share of H would be the highest, right? So अगर मान लीजिए इनको 3 एकड़ और मिलता है तो H को कितना मिलेगा और? Tell me. मान लीजिए इसमें से हम 3 एकड़, यस 15 एकड़ मिलेगा अकॉर्डिंग टू द, ये जो प्रोपोर्शनल इक्वालिटी है वो जो समाज का एक बैलेंस है वो नहीं बिगड़ना चाहिए, राइट? सो एफ को मिलेगा, जी को मिलेगा 5. अब मान लीजिए कि हम सी को 3 नहीं देके सी को हम 6 एकड़ देते हैं, तो हमें जी को कितना देना पड़ेगा? जी को यस 10 एकड़ देना पड़ेगा. निष्ठा, आर यू गेटिंग पॉइंट? If I am giving 6 acre to the 3, then I have to give 10 acre to G, and 15 को कितना देने पड़ेगा? 30 acre, 30 acre of land. So it should get according to their, deserve, what they have. Distribution should be proportional. Is that okay? Yeah. Go through the last class. We discussed it in the detail. Yeah. If you are unable to take class, take recorded class. जहां पे बातचीत हो वहां थोड़ा सा एक्सीड भगा दीजिए. You are very smart. You know how to cover up the backlog classes. जहां पे बातचीत ज्यादा हो रही है उसको भगा दीजिए. जहां पे सब्सटेंशियल कुछ बातें हो रही है स्टडी की, उसको सुन लीजिए आराम से. ओके, देखिए, therefore distributive justice is the distribution of social assets as per proportional worth of the individual in the prevailing constitution. Constitution recognizes social worth of individual and reward social assets accordingly through distribution. इतना लिख लीजिए. हो जाए तो मुझे बताइएगा.
If you're done, then let me know. I will move ahead. If you have any confusion, let me know. अमीशा क्लियर है? डेजर्ट का मतलब, रिवार्ड का मतलब? Yes, very good. शब्द क्लियर होनी चाहिए. The word should be clear to you, otherwise you won't get it, the meaning. अंश ने कर लिया, जानवी, शिवानी done. What about Ila, Atir, Nishtha? Do it, no problem, do it. अगर सिंपल मैं लेक्चर देके निकल जाऊंगा ना, आप नोट्स नहीं बनाओगे. I know. People will do it, but you all not do it, right? So this is my post, the personal post. Ila, desert means deserve. What one deserves, that is called desert. So for example, those who have 15-acre land deserve 50-acre land, and those who have 5-acre land deserve 5-acre land only. And those who have no land, who will not get any land, right? That the meaning of desert that time. But in the recent contemporary political philosophy, yeah, exactly what. In contemporary political philosophy, the meaning of desert is totally different. You know, David Miller will talk you. जब मैं आपको justice पढ़ाऊंगा, David Miller talks about, you know, a poor desert more and rich desert less, right? अभी जो ये जो affirmative action है, affirmative action का जो concept है just इसका उल्टा है. जिसको कम है उसको ज्यादा दीजिए, जो ज्यादा है उसके पास तो है, उसको कम दे दीजिए, right? That is not, you know, meaning of Aristotle. Aristotle is, that time was totally different. Yeah, do you want to say anything? Anyone? आज तो मुझे लगा कि आपका क्लास कैंसिल करना पड़ेगा. एक बार मैंने सोचा घर से क्लास ले लूं, बट आई थॉट नहीं चलते हैं, तो क्या पता घर पे इंटरनेट काम ना करे. आतिर, आपके घर पे काम करे इंटरनेट? कल तो नहीं किया था, तो आई सस्पेक्टेड. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. मेरे घर में तो वाईफाई कल भी काम कर रहा था, आज भी काम कर रहा है. और मेरे घर में तो बार बार मैसेज आ रहा था. हाँ, वो एयरटेल का काम चल रहा है, मैंने सोचा कि घर से मैं ऑफिस चले जाऊं ताकि आप लोगों से बातचीत हो जाए. मैं तो बार बार टेलीग्राम चेक कर रहा था कि मैसेज आ जाए कि आज कैंसिल हुई है. मैं बोला यार जल्दी है तो मैं सो जाऊंगा फिर से. अच्छा, नहीं, रेगुलर तो मैं रहूंगा, राइट? एक्सेप्शनल है कि मेरी तबीयत खराब हो जाए, मेरे घर में किसी को कुछ हो जाए, देन आई हैव टू rush to doctor, otherwise I'll be continuing, right? I'll be continuing. Now is it clear? Now come to corrective justice. देखिए, corrective और rectificatory justice. Corrective और rectificatory justice. ओके, व्हाई? हाँ, एक क्वेश्चन मुझे आ गया, आप नहीं पूछेंगे तो मैं ही पूछ लूंगा. यस, पूछिए. हाँ सर, एक्चुअली मुझे ये पूछना था दैट ये जो हम जस्टिस पढ़ रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव एंड करेक्टिव जस्टिस, ये लीगल जस्टिस जो है उससे अलग है ना? उस समय लीगल कॉन्सेप्ट रोम ने लाया था. ये हम अभी एथेंस पढ़ रहे हैं. उस समय लीगल का कोई नामो निशान नहीं. ओके.
ठीक है, तो जो आप लीगल की जिस सेंस में बात कर रहे हैं वो रोमन के द्वारा डेवलप किया गया है, राइट, अप्रोक्सीमेटली 4th or 3rd 4th century, राइट। ओके अच्छा, आपने सवाल नहीं पूछा, मैं पूछता हूं। अब मुझे ये बताइए कि व्हाई प्लेटो sorry Aristotle emphasized on the proportional desert, proportional equality. Unmute yourself. इला झगड़ा करो मेरे से सब लोग, राइट सर ये सर वो, राइट, अनम्यूट योरसेल्फ। अगर क्लास में होते तो फिर मैं तो उठा देता, तो मैं बोलो, मतलब या बैठे बैठे बोलो, कोई बात नहीं। अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, Towards the revolution, political instability. yeah, one is political stability, one another thing मीन्स एक क्लास जैसे कि वो भड़क जाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली अगर वेल्दी लोग भड़क जाएंगे तो फिर तो वो पूरा उनके पास कैपेसिटी होती है। या वो दैट देयर विल बी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड रिवॉल्यूशन, दैट्स वन रीजन, राइट। अनदर रीजन वो तो मैंने कह दिया था, it is because of the family background जैसे जो Aristotle belong करता है इससे, because he was from a rich family, so he would prefer that is psychological analysis, yes, कि the Aristotle justified proportional equality because of his personal location within the society. So since he was aristocratic, from aristocratic family, he proposed distribution to get more share, right? One more thing he said, you know, social worth display moral virtue. Think about property. What he said, property has many virtues, right? So for him, the more social worth, you know, more social and economic assets will have more virtue. Clear? If you have more economic and social worth, then you will have more higher virtue, right? And virtue is one of the important component that is coming from Socrates. You know, Socrates से चलता आ रहा है, civic virtue, moral virtue. प्लेटो ने केवल moral virtue की बात की है, एरिस्टोटल civic virtue की भी बात करता है, राइट? जब मैंने आपको प्लेटो बताया तो कभी civic virtue की बात नहीं करी होगी। एनीवे, चलिए, दैट वाज माय वो मेरे दिमाग में आया और मैं आपको एक्सप्लेन किया। एनीवे, करेक्टिव और रेक्टिफैक्टरी जस्टिस लिखिए। देखिए, इट इज बेस्ड ऑन अर्थमेटिक प्रपोर्शन and it is concerned with private transaction. Arithmetic corrective justice is based on arithmetic proportion and it is concerned with private transaction. Corrective justice rectifies past wrong. Nishta, we all have discussed in the last class, right? Just I'm dictating, right? If you have confusion, ask me. Corrective justice rectify the past wrong. और जो कल नहीं थे, इला आप थी कल? No, so you have to go to the last class for better explanation, right? हाँ, ठीक है, समझा देना, right? Corrective justice rectifies the past wrong. It resolves private transaction among individuals. It resolves private transaction among individuals. There are two kinds of transaction among individuals. First, voluntary transactions like selling and buying, lending at interest,
depositing and involuntary transaction like theft, killing, confinement, robbery, defamation and public insult. इतना लिख लीजिए, बताइएगा. Note it down, then I'll ask a question from you. Okay, Ans, can you tell me what is difference between voluntary transactions and involuntary transactions? Sir, seen from the examples, it is like अगर हम present time में देखें तो voluntary is something जो under the light हो रही है, मतलब जो भी transaction है वो सब note हो रहा है official data में, and involuntary is जो पीठ पीछे से करते हैं. यहाँ पे consent का बहुत बड़ा role है. All voluntary action is based on consent. For example, you are buying something and you are getting money. If you are, if you are giving money, if you are selling something, then you are taking money, right? For example, मैंने आपसे कोई पैसे मांग लीजिए कि आप मुझे ऐसे 50,000 दे दीजिए और मैं 1 year में आपको लौटा दूंगा, तब तक मैं आपको इंटरेस्ट देता रहूंगा, आपने मुझे पैसे दे दिए. ये वॉलंटरी एक्शन है, ट्रांजैक्शन हमारे और आपके बीच में. बट तब क्या जब मैं आपके घर जाऊं और 50,000 आपके ड्रॉर से निकालूं, अपने पॉकेट में डालूं और चले जाऊं. It is not voluntary action. It is called theft. Shivani, not getting? Yes, okay. It is called involuntary transaction. So in involuntary transaction, there is no consent, right? Like even confinement. So somebody confines someone. It is not voluntary action. Robbery is not a voluntary action because there is no consent here. Public insult. आप जा रहे हैं और किसी ने आपको insult कर दिया बिना कुछ, तो it is a very much bad thing. So corrective justice is for involuntary action. Network issue का क्या मतलब है शिवानी? I'm not getting. Am I audible to everyone? Yes? Okay. So Shivani, what do you mean by network issue? If you are getting everything, voice is not clear. Is it happening with everyone? Avinav Raj, Avinay, Amisha, Avinav Am? No, it is coming correctly, clear? Okay. Thank you, Ans and Janvi. So Shivani, maybe from your side, ये problem है online classes के साथ. You are at home, this is good. You can have breakfast while doing class, this is good, right? But network though. Okay, so it is clear to everyone now, right? Aristotle said that there is no difference whether a good man has defrauded a bad or a bad man has defrauded a good man. The law look at only the nature of damage. अरिस्टोटल ने कहा कि कोई मतलब नहीं है कि एक अच्छा इंसान, जिसको समाज अच्छा इंसान कह रहे हैं,
उसने डिफ्रॉड कर लिया, उसने कुछ ऐसे कर लिया, चोरी कर ली, पब्लिक इंसल्ट कर दिया, कोई मतलब नहीं है। या बैड मैन, कोई खराब आदमी है, उसने पब्लिक इंसल्ट कर ली या मर्डर कर दिया, इट डजंट मीन। लॉ केवल ये देखेगा कि डैमेज क्या हुआ है, एंड लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स, राइट। सो लॉ शैल टेक इट्स ऑन कोर्स, right, and it shall treat both parties equally, and the law only asks whether one has suffered injustice and other has done it. जज क्या करता है? हाँ, दोनों पक्ष से पूछता है, अच्छा जी आपका क्या हुआ? तो सर इसने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। फिर दूसरी पार्टी को बुलाता है, दूसरे पक्ष को, और कहता है कि अच्छा जी तुमने किया ये? तो वो भी अलग अलग आर्गुमेंट देता है। कोई तो क्या कबूल कर लेता है कि हाँ सर मैंने किया, गलती से किया, जो भी है, बट लॉ टेक्स बोथ पार्टीज इक्वली, राइट। एंड लॉ ये पूछता है, कानून ये पूछती है कि अच्छा आपके साथ क्या हुआ है और आपने क्या किया है। इतना लिखिए, जस्ट फिनिश दिस। PPT Yes. not visible again. Not visible. Yes, Okay. sir. Hold on, I'm just uploading it again. सबको पहले कर लेना चाहिए। Yeah, if everyone has written it, then let me know. Are you done? Very good. Nishtha, Shivani, Janvi, Ila, done. Ans, Abhiraj, very good. Ashad, Abhinav M, Abhinav Raj Singh, Abhinay, कर लीजिए। उसके बाद बताइएगा, फिर से मैं अपलोड कर दूंगा, तो फिर सुनीता देख लीजिए। तब तक हम लोग बातचीत कर लेंगे थोड़ा सा। गुड शिवानी, गुड निष्ठा, मैं हर शर्ट में अच्छा लगता हूँ आखिर? एक्चुअली शर्ट मुझसे अच्छा लगता है, राइट? Yes, sir. Now visible. Visible. Okay, write it then. Yes, sir, in this book. Okay, write it. It might be network issue. अगर ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगे तो आर यू रेडी फॉर ऑफलाइन और नॉट ऑनलाइन? सर ये फिर से ऐसे ही हो गया। फिर से ऐसे हो गया, मुझे फिर से वन मिनट। सर हम तो चाह रहे कि ऑफलाइन स्टार्ट हो जाए, बट सभी लोग चाहेंगे तब तो। होम सिक हो गया सर। हाँ, होम सिकनेस हो गया। कोई बात नहीं, अभी कहाँ जाओगे? फिर से बढ़ रही है केस। कल मैंने टेलीविजन बहुत दिनों के बाद खोला और देखा 47,000 केस है इंडिया में। जी सर। राइट, सो इट्स बेटर टू बी सेफ। जब खुलेंगी तो ऑफ कोर्स, जब खुलेंगी तो खुल ही जाएंगी। सर वैसे अपना क्लास अगर स्टार्ट होगा तो राजेंद्र नगर में ही होगा ना? हाँ, राजेंद्र नगर में होगा। और क्या सर, फिर बाजू में करोड़ों वाक्य, वहां पे छोले कुलचे खाने चलेंगे। और क्या? just what should I do? Janvi, refreshing. You need to adjust the PPT since she's using her phone. अच्छा, अशद बोल रहे ऑनलाइन, शिवानी ऑनलाइन, इला ऑनलाइन। Oh, we will continue ऑनलाइन। ऑफलाइन के लिए हम लोग मिल लिया करेंगे कभी। क्या नाम है इसका, आतिर? विजुअल है सुनीता? सर ये दूसरा से कर रहे थे। अच्छा, मैंने गलत PPT लगाई थी। ओके, अब ठीक है? यस सर। यस सर। और अंश ने लिख दिया है कमेंट में। अच्छा, शी इज यूजिंग फोन ना, दैट्स ऑल, नो प्रॉब्लम। राइट, गुड अंश। अंश, आर यू आल्सो टाइपिंग? सर एक्चुअली मैं पहले टाइप करता हूँ क्लास के अलाउंग, एंड देन जब रिवाइज करता हूँ
शाम को लेटर, तो उस टाइम मैं लिख के करता हूँ। हाँ, कॉपी में लिखना, राइट? यस तो आपका नोट्स तो बड़ा बढ़िया हो रहा होगा, बन रहा होगा। यस सर, बिल्कुल। अच्छा, मुझे भी भेज देना फिर। हाँ, श्योर सर। ठीक। यस, सुनीता कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ऑफलाइन भी क्लासेस शुरू होंगी आतिफ, इफ यू वांट देन यू कैन ज्वाइन अस, राइट? बट बैच चेंज हो जाएगा आपका, यही होगा और कुछ नहीं होगा। सर ऑफलाइन स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ इसमें से कितने सारे लोग मतलब कि ऑनलाइन तो चलिए कंटिन्यू करने वाले हैं, पर हमारा जो वॉरियर बैच है, सी हॉक बैच है और 19 बैच है, उसमें से बहुत सारे लोग ऑफलाइन में कन्वर्ट होने वाले हैं और कितने लोग तो दिल्ली आने वाले हैं। कोई बात नहीं, आ जाओ दिल्ली। मैं, तुम तो दिल्ली में हो। मतलब मैं तो दिल्ली भी हूँ। Okay. Oh, is it the writing making sense to you? Yeah, very good, Sunita. Yeah. Making sense? ये कहता है कि ये फर्क नहीं पड़ता है कि क्राइम कौन कर रहा है। लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स, राइट? लॉ केवल इतना पूछेगी कि नेचर ऑफ क्राइम क्या है और दोनों पार्टीज को इक्वली ट्रीट करेंगे, राइट? No, here merit is not considered. Here is crime. Here is the transactions, right? Who had done it? So here merit doesn't work. आपके पास wealth है तो नहीं आप justice से भाग जाएंगे? No, you have to be under the law. We'll teach you law. What Aristotle mean by the term law? Okay, Amisha, clear है? Nishtha, is it clear to you? Okay. Now continue it. The judge shall try to equalize the situation. The judge shall try to equalize the situation. The judge shall try to equalize the situation between the parties by imposing penalty on wrongdoer. No para change. Just continue. Initially I said continue it. The judge shall try to equalize the situation between the parties by imposing penalty on wrongdoers and give compensation to the sufferer. अभी भी ऐसा ही होता है, right? So it tries to rebalance loss and gain and restore fair share. वही प्रोपोर्शनल इक्वालिटी को फिर से रेस्टोर कर लेना है। Fair share. Done? Okay. Okay. So इसी में लिखना है the victim should get compensation for damage, but the perpetrator should not be criminalized in order to satisfy victim. इसी में कंटिन्यू करना कि विक्टिम जो है उसको तो
जो डैमेज उसका हुआ है वो तो मिल जाना चाहिए, बट जिसने परपेट्रेटर है, जिसने वो किया है, उसको बस रेपरेशन के हिसाब से ही पनिशमेंट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आपने आपका बैग छीना आतिर का और आतिर ने ऐसा घुसा मारा कि 2 दिन हॉस्पिटल में। आतिर, दैट इज नॉट जस्टिस, राइट? Justice is you take your bag back and then make some little slap की so that उसको humiliation नहीं होना चाहिए, उसको criminal, you know why a criminal is a criminal? There is a theory why a criminal is a criminal. हाँ, पूरे आवाम से पिटवा दो, उसे मॉब लिंचिंग करवा देना। राइट? अच्छा, देखने दो मैंने क्या लिखा, कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। अब पैरा चेंज करना है, अब लिखना। डन? इतना लिख करके फिर मत मुझे बताइएगा। Then we will write one more para on corrective justice or rectificatory justice. Good, Amisha, Shivani, Ans, Janvi, Nishtha, Avinay, very good. Abhinav Singh, very good, very good. So I hope everyone has done. Sunita, शिवानी, अच्छा शिवानी तो पहले आ चुका है। अशद कर लिया, वेरी गुड। Now change your para and write corrective justice will be an equalization comma an attempt to return to previous position. By legal means. By legal means. By legal यहाँ पे वर्ड तो यूज किया है, one minute, yes, return previous position by, जो लीगल है ऑफ कोर्स रोम से आया है, by using law. अब ठीक है, अंश lawful means, yes, or by lawful means, yeah, by using law, yeah, correctly you have, yeah, very good, by using law. Done, everyone? In such case of damage, cases of damage or loss, the judge will seek means between loss and gain. Loss and gain. Whenever there will be such kind of dispute, whenever
there will be such kind of dispute, men have recourse to judge. That is justice. That is justice. Done? Okay. If you have question, most welcome. The judge is, judge is a person who's a justice personified. नहीं लिखवाऊंगा मैं, बड़ा थोड़ा सा jargon word हो जाएगा. But what is justice? अब जज बोलते हैं, जज क्या है? ये जज क्या है? एक जो जज बोलते हैं, जज का मतलब क्या है? जज का मतलब है justice personified. Justice personified means a person who carry justice, who do justice. वो भी इंसान ही रहता है ना, राइट? जज क्या रहता है? वो भी हमारे तरह, आपकी तरह इंसान ही रहता है. और जज भी देखेंगे कभी कभी जो जस्टिस देता है, जो लॉ, आपको लगेगा अरे क्या मतलब बकवास जज है तो जज मीन्स जस्टिस पर्सोनिफाइड. Right? What he does, judge restores proportional equality. He restores proportional equality. Right? So justice is not reciprocity. आंख निकाला मेरा, अगर किसी ने मर्डर कर दिया तो उसका भी मर्डर कर दो. So समझ में आया ये? Right? He restores proportional equality. Hence, restoring or ensuring proportional equality in the polis is justice. So proportional equality से के टर्म में जस्टिस पूछ सकता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा लिंक कर दिया. हो जाए तो मुझे बताइएगा. Then right? Very good. लॉ बचा है, रिवॉल्यूशन बचा है. कल ही खत्म हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट नहीं हो रहा है. That's why. सबका हो गया? I hope you have done. Okay. So now talks about law. What is law? Aristotle says, it is not good, to allow man to rule the law. Let the law rules rather than man. What is law? Law is a piece of legislation, right?
Who framed the law? कौन बनाता है ये कानून? Legislator. Legislators, right? Right? So not one legislator, legislators you have used. So many legislators. So law is a collective wisdom. नहीं, theoretically law is a collective wisdom. But अगर मोदी जी और क्या नाम है इनका शाह जैसे हो जाएंगे तो कलेक्टिव विजडम नहीं रहता है, फिर वो एक ये दो लोगों का विजडम रह जाता है फिर, और सब हांजी हांजी करने में लग जाते हैं. Does it happen or not? हर जगह होता है, right? So law is a collective wisdom, and Aristotle said, no, that we don't permit a man to rule, but the law. Who is the actual ruler? Who should be the actual ruler? Aristotle says law. Even the wisest person cannot be more wisdom or more wise than law. Why and how? एक बार फिर से, जो कानून है, लॉ है, क्या है? एरिस्टोटल कहता है कि जो हम अपने राज्य में किसी इंसान को अलाउ नहीं करते हैं कि वो रूल करे. रूल कौन करेगा? लॉ, कानून. कानून क्या है? कानून एक ऐसी संविदा है, एक ऐसा प्रावधान है जिसको लेजिस्लेटर्स ने बनाया है. लेजिस्लेटर मतलब हिंदी में क्या होता है यार? लेजिस्लेटर मतलब विधायिका तो होता है. anyway legislators, who legislate. अब एथेंस में क्या था? खुद सिटिजन लेजिस्लेटर्स थे. एंड लॉ बनाता है तो बहुत सारे लोग मिलकर के लॉ बनाते हैं, राइट? सो लॉ इज अ कलेक्टिव विजडम. इट इज नॉट अ विजडम ऑफ सिंगल पर्सन. सो लॉ को रूल करने दीजिए. एक इंसान रूल ना करे, केवल एक लॉ रूल करे. कौन रूल करे? लॉ. और ये कलेक्टिव विजडम है. मैं बता दूं, ये जो वाइजेस्ट पर्सन है उससे भी बड़ा वाइज है. क्यों? क्योंकि जो वाइजेस्ट पर्सन वो भी पार्टिसिपेट किया है लॉ बनाने में. The wisest person has participated in making law, right? So law is not a piece of legislation made by one legislator. It is a collective wisdom, right? For example, take parliament. Theoretically it is it is wiser than the wisest man in the city state. Am I clear or not? Tell me. सर सर इसको कलेक्टिव विजडम इसलिए कहते हैं बिकॉज लॉ जो बना है लाइक बहुत सारा वाइजेस्ट मैन मिलके बना है, इसलिए. नहीं, लेजिस्लेटर तो वाइजेस्ट मैन ही होते हैं ना. जी सर. आप मान लीजिए, आप किसको चुनते हैं? कभी आप कभी चुनते करप्ट हैं, भी निकल जाते हैं. मैं तो करप्ट सर निकल, नरेंद्र मोदी. चुनते तो हम ही ना. नमो नमो. तो हमारी क्या है, वो सोशल रिफ्लेक्शन है. वो मत लीजिए, सोसाइटी पे जाइए और सोसाइटी में लोग नमो नमो कर रहे हैं, तब वो नमो नमो वहां पर है, राइट? हर हर मोदी, घर घर मोदी चल रहा है, तब लोगों ने इलेक्ट किया है, राइट? और तब वो वहां पर है. और उसकी जो भाषाएं हैं, समझिए, सत्य मानिए कि समाज में मेजोरिटी की वही भाषा है, तभी वो आए, right? Before understanding politics, you must understand society. I'm telling you, and also economics. ये दो चीज अगर समझ ली, पॉलिटिक्स को समझने में आसानी होगी, राइट? आतिफ?
हाँ, रेहेटरिक में ही इज अ मास्टर। आई टोल्ड यू ना, रेहेटरिक अगर वो एथेंस में होते तो बहुत सबसे बड़े गुरु होते। यस, राइट। चलिए, इतना समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया? सुनीता, शिवानी, अमीषा, लॉ, कलेक्टिव विजडम, लॉ मेड बाय लेजिस्लेटर्स, अंश क्लियर है? इला, नो क्वेश्चन? नाउ यू हैव टू राइट। आधा घंटा है हमारे पास, ये आज खत्म कर लेते हैं, राइट? कुछ नहीं है इसमें। और शायद कल रिवॉल्यूशन खत्म करके हमारा अरिस्टोटल खत्म हो जाएगा। Then tomorrow is Friday. Saturday, are you ready for test? मैंने कॉपी कुछ लोग को भेजा है, कुछ लोग को नहीं भेजा है। जानवी, I was waiting for your paper basically. So I thought कि आज आपका पेपर आ जाएगा तो सब इकट्ठा बैठ के चेक कर लेंगे। तो मैं बैठा ही नहीं कभी चेक करने के लिए। पॉलिटी में तो मैंने भेज दिया, कल 18 पेपर भेजे रेडी करके। लोगों ने इतना पेपर भेजते हैं। एथिक्स क्लास we'll have Monday. I will पक्का टेक एथिक्स क्लास, बहुत आसान है। Will tell you about ethics. So अगर आप मंडे को टेस्ट देते हैं तो हम सैटरडे को एथिक्स पेपर ले लेंगे। What do you want? Choice is yours. And if you want to push little more time, if you want more time, then we can have on Wednesday, Thursday. You become relaxed and comfortable, right? So you should prepare yourself. Test इसीलिए होता है कि आप prepare करें, right? Right, and sit honestly, prepare honestly, honest with your own self. I don't require honesty with me. मुझे कोई honesty की जरूरत नहीं है, right? So decide क्या हुआ? No Monday, then what? Thursday, Wednesday? वैसे नहीं बोलना सर कि मुझे ना 1 महीने का टाइम चाहिए। Wednesday, okay. इलाज Wednesday, शिवानी Wednesday, अशद Wednesday, Adir, good. Okay, so I think majority of voice are coming for Wednesday. Amisha, क्या ठीक रहेगा Wednesday? निष्ठा खुद बोल लेगी। She can write and she can speak, you know, and she speaks very politely. You know, I talked with her. She speaks good. Wednesday is fine. Yeah, she spoke. She can speak. सर आप गलत फहमी में है बहुत। छोड़िए सर, वेडनेसडे ठीक है। And she said कि when I speak, it's very difficult to stop me. वो सर जब हम सर से बात करते हैं तो उसमें हम पोलाइट हो जाते हैं। मैं भी देखिए कितना पोलाइटली बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, सर से बात करते तो पोलाइट होना ही चाहिए थोड़ा। yes. और दोस्तों के साथ पोलाइट होके क्या करोगे? दोस्तों से पोलाइट होके क्या करोगे बताओ ना? वही तो सर। So I'm dictating now. Wednesday is pakka for your test. Test should be on Aristotle only. Okay, Aristotle पे focus रहेगा आपका test, right? And question, how many questions do you want to solve it? 20 questions? Sir, subjective या objective? Only subjective. 20 question. 20 questions, is it fine? हाँ सर। ठीक है? Yes. Okay. Timing 3 घंटा। Timing आप जितना ले लो, कोई बात नहीं। You write your own. Timing ऐसे नहीं 5 घंटे ले लो, but yes, reasonable time is allowed. Sir, standard time 3 hours 20 question. 3 hours, okay. 3 hours 20 question. Do it at your home and then send it to me. ठीक है सर, okay. और मेरा तेल निकल जाता है चेक करने में,
right? इतने लंबे पेज का होता, right? Anyway, but I have to do it. Yes, I have to do it. So 3 hours, Janvi, okay? That works, but sir, I was saying like I had a request to make if you could give the questions from previous year question papers itself, like or whatever questions. Why you are worrying about that? Yeah, okay, no, just because we'll be able to practice in that way. Now we won't have. Why you are just see? I have taught you Plato and Aristotle. You go for previous year questions and check it. Yeah, okay, sir. No, that's what I was asking. Also, sir, I'll No. send you the test, the previous one this Sure, weekend. sure. As you feel comfortable, right? Whenever, no issue, no issue. But when I'm teaching you, you know, I told you that if UPSC asks, you know, 100-degree level, I teach you 101. That's my you know, trust. You know, I'm teaching with your all devotions and some commitment, with some commitment. Okay, right? Rule of law. Rule of law. The actual ruler of the state. Ruler of police. Okay. So the actual ruler of police. What is law? पहले कुछ लिख लेते हैं law के बारे में. What is law? लिख लीजिए. Okay. Law is region or collective reason without passion. Law is collective reason without passion. Law में क्या है? Reason है, passion नहीं है. Passion से काम नहीं करना है. आप कभी भी passion से काम मत करना. Use always your reason. Okay, use your always logic. Right? आपको एक थियरी है एनलाइटनमेंट का, वो पढ़ाऊंगा. एनलाइटनमेंट का थियरी कहता है कि बिलीव योर रीजन, राइट? सस्पेक्ट ऑन एवरीथिंग, क्वेश्चंस ऑन एवरीथिंग. इवन अगर डॉक्टर आपको दवाई देता है, यू मस्ट हैव सस्पिशियस माइंड, राइट? इवन यू डोंट ट्रस्ट योर बुक, रेज क्वेश्चंस whether this book is saying whether it is right or wrong. ठीक है आतिर? फेक न्यूज पकड़ने में बहुत काम आएगा. ठीक. सो ऐसा नहीं कि न्यूज आया और पास कर दिया दोस्तों को, अरे देखो यार ये हो रहा है. नो, जस्ट क्रॉस एग्जामिन इट. डोंट बिलीव दैट. ओके. लॉ इज कलेक्टिव रीजन विदाउट पैशन. It is a collective wisdom of the police. Aristotle argued that we do not permit a man to rule. A man to rule, but the law. It is too easy, or it is very easy for a man
for a man to rule in his interest. In his interest. The function of a statesman functions of a statesman or bracket में लिख दीजिएगा rulers is to be the guardian of law. Who is the guardian of law in India? Who is the custodian of law? Supreme Court. Who is the custodian of Indian Constitution? It is Supreme Court, right? Right. Very good. So function of a statesman rulers is to be the guardian of law. Right? That is guardian of the justice. Guardian of the justice. And proportional equality. I hope you got the idea of proportional equality, everyone. नहीं समझ में आए तो मुझे पूछो, right? 10 बार पूछना. कहते हैं हमारे यहाँ कि टीचर, लॉयर और डॉक्टर से सब कुछ बोलना चाहिए, राइट? और अपनी मम्मी से भी सब कुछ बोलना चाहिए. No problem. Right? I'm not equalizing mom with lawyer, doctor. No, that's a different domain. But lawyer. सर पीछे से किसी न किसी का बच्चा चिल्ला रहा है यार. उस बिल्डिंग में, किसी बिल्डिंग में हो रहा है. यस, अब तुमने बोला तो मुझे ध्यान आई है. बहुत शार्प हो तुम, राइट? सर एक मिनट, स्लाइड थोड़ा इसका फर्स्ट स्लाइड में ले जाइए, रूल ऑफ लॉ का. ये लीजिए, बस सर, लिख लीजिए. हो जाए तो बताइएगा फिर, ऐसा नहीं कि लिख लिया बस. अंश, if you're done then let me know. Right. सर हो गया, डन. ओके. पैरा चेंज करना है. यस अमीशा. ओके ईशा, अमीशा, मुझे तो ध्यान था पढ़ाने में. हो सकता है मैंने ध्यान नहीं दिया वॉइस के लिए. अभी मुझे जब आतिफ ने बोला तो ध्यान. ओके, पैरा चेंज एंड लिखिए. Citizens who are equally in ruling and being ruled. Citizens who are equally in ruling and being ruled are legislators or lawmakers. They deliberate and apply
they deliberate and applies their intellectual capacity intellectual capacities and moral virtue in order to make law. जब लॉ कोई बनाता है, जो सिटीजन वो खुद का रूलर भी है, रूल्ड भी होता है, वो अपने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, डेलिब्रेशन, डिबेट, कंटेम्पलेशन सब अप्लाई करता है लॉ बनाने के लिए. मोरल वर्च्यू, राइट. Once laws are framed, all should subordinate themselves to the law. Statesman or the statesman needs to look after whether the law are applying, or laws are applying and establishing proportional equality in the society. और मैं बता दूं, गांव में अभी भी यही प्रोपोर्शनल इक्वालिटी ही लोग फॉलो करते हैं. जो धनवान है उसको लोग ज्यादा देते हैं. इवन शहर में आप जब गिफ्ट देते हो रिलेटिव में, सब रिलेटिव इकोनॉमिकली एक जैसा तो नहीं होता है. जो धनी होता है उसके लिए बड़ा मोटा गिफ्ट लेके जाते हो, हाँ, और जो थोड़ा ऐसे रहता है, अरे ठीक है ऐसे ले लो चलेगा. डू वी डू इट और नॉट? टेल मी हाउ ही वाज प्रैक्टिकल, राइट? देखिए, nothing is static. Nothing is static. Nothing is static. Comma, therefore, again comma, law can be changeable. Our law is changeable. So law can be changed. Yes, done. जो समझ में नहीं आया, 151 रुपये. अरे पता नहीं आतिर, मैं तो कभी जाता नहीं हूँ शादियों में, तो मुझे देना नहीं पड़ता है. I know proportional equality. सर, ये एरिस्टोटल को किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया क्या? Therefore, law is changeable. सर, शिवानी, हाँ. एरिस्टोटल को किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया क्या? एरिस्टोटल को किसी ने क्रिटिसाइज, जो भी क्रिटिकल पॉइंट है वो तो मैंने लिखवा दिया आपको, और किसी ने तो मुझे कहीं पे कुछ ऐसा मिला नहीं.
अगर मिलेगा तो बताऊंगा। अभी तक तो हमने शायद इतना, हमने प्लेटो के पर्सपेक्टिव से ही क्रिटिसाइज किया है एरिस्टोटल को, बट लॉ इज गुड थिंग, गुड थ्योरी। क्रिटिकल वहां पे होना है जहां पर वो कुछ अनरीजनेबल कह रहा है, बट अगर कुछ चीजें रीजनेबल कह रहा है तो if you want expert view then I can give you expert view, but not necessary for you. कुछ जार्गन वर्ड हो जाएंगे आपके लिए। डन, आपके तरफ से हो गया, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए अब थोड़ा हम बताते हैं आपको अरिस्टोटल और प्लेटो के बीच में लॉ के बारे में थोड़ा सा। अच्छा, प्लेटो जो बात करता है वो गुड रूलर की बात करता है, राइट, फिलोसोफर किंग, या बट जो एरिस्टोटल है वो गुड लॉ की बात करता है। ये गुड लॉ की बात करता है, राइट, यस। नाउ इफ यू लुक एट, he talks about PK, philosopher king, as Janvi has pointed out, but he said law has impersonal quality. कोई भी इंसान आएगा वो जज होगा, राइट। लॉ हैज impersonal quality, राइट। आप भी अगर निष्ठा बैठ जाएगी चीफ जस्टिस के सीट पे, शी विल बी चीफ जस्टिस, ओके। और कोई अगर इला बैठ जाएगी, निष्ठा हो जाएगी रिटायर्ड, देन इला विल बी द चीफ जस्टिस। सो इट हैज इम्पर्सनल क्वालिटीज। तुम बैठ जाना उसके बाद, राइट, राइट। एंड व्हाट इज लॉ? इट इज अ फॉर्म ऑफ रीजन। It is a form of region, you know, unaffected by passion and desire. लिखिए, form of region, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। कुछ आवाज आ रही ना आपको टक टक की? यस, कुछ आवाज आ रही है इधर से? नहीं, ओके ओके। आखिर बुढ़े में ही ऐसी चीफ जस्टिस बनते हैं? किसी को देखा है 30 साल का आदमी और चीफ जस्टिस बन गया? पहले बुढ़ा तो हो जाओ, राइट, पहले ये सब कर लो, उसके बाद। ओके, फॉर्म ऑफ रीजन विदाउट पैशन और डिजायर, दैट इज लव, ओके। So that is the difference. Second difference that in Plato, he also gave priority to law, but in the second book, next book, priority to law, but उसने कहा कि अगर wisdom, wise man अगर आ जाए तो law की कोई जरूरत नहीं है, राइट। बट इसने कहा, क्या कहा? नो, लॉ इटसेल्फ कैरी वर्च्यू, इट इज अ वाइजेस्ट देन द वाइज मैन। सो प्रायोरिटी टू लॉ दे हैव गिवन, राइट, बट intellectual capacity overrides law in Plato's theory. But here, law itself carries virtue.
virtue. It is wisest than wiser. Right? So ये दोनों डिफरेंस है ज्यादा. Done? Okay. So कुछ सवाल है तो पूछें. थोड़ा स्टेट के बारे में और बताएंगे लॉ से रिलेट करके. Then I'll come to little bit on education. बहुत कम है. Then revolution, the last topic. Saturday you want ethics. I'll take class on ethics. पक्का. Done? Okay. So, is anyone wants to stay today? नहीं? तो चलिए फिर कल मिलते हैं. I'm stopping here. Then, take care of yourself. Take care of yourself and prepare for your test. Okay? Atila Avinav Raj Singh, Avinay, Amisha, Ansh, Ashad, Atir, Ila, Janvi, Nishtha, Shivani, Sunita. See you tomorrow. Bye bye.